Sir, on behalf of the entire House, I would like to compliment you on completing 1 year as the Vice President of India and for the astute leadership that you have given to our House, to Parliament. You have brought dignity and grace to the second highest constitutional position in this country and truly helped bring about a lot of improvement, a lot of change with your legal acumen Leader of the House. on the conduct and proceedings No, please. of the House. Thank you. We all feel, Thank you. sir, this is something we are all, I speak on behalf of all sides. I'm sure all of us will agree with that. All of us will agree with that. Thank you. Please. Sir, I just want a minute more. Sir, you come from a farmer's family. आपने एक किसान परिवार से आकर एक धरती पुत्र के नाते जिस प्रकार से अपने ह्यूमिलिटी से, अपने सरल स्वभाव से, व्यक्तित्व से और कार्यशैली से और साथ ही साथ जो आपका कानून के ऊपर पकड़ है, जिस प्रकार से आपने कानून की समझ को हम सबको भी सिखाया, हम सबको भी आगे समझने का मौका दिया। मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उस हाउस की। Papers to be laid on the table. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission. जो लीडर ऑफ द हाउस है, उन्होंने आप 1 साल कंप्लीट होने के लिए बधाई दी, तो शायद हम सबको अगर कह देते तो सभी मिलके 4 बात कर सकते थे, लेकिन यही तो बहुत मुश्किल है। बगैर बात करे ये सब वन वे करते हैं सभी, तो करने हम भी उसमें शरीक होते हैं और जुड़ते हैं। एक और दूसरी बात आपसे विनंती है, जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनंती है। क्योंकि आज लास्ट डे है और इतने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और प्रिविलेज कमिटी को रेफर किया गया, 6 लोगों को किया गया और वहां पर आदिर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। ये ऐसा अरे संविधान में दोनों हाउस है, दोनों एक हाउस नहीं है, दोनों हाउस है। At least on the last day, at least on the last day, let us listen to the leader of the opposition, please. I can tell you, during 1 year, if I have learnt maximum, I have learnt from the leader of the opposition and the senior leaders. In my chamber, they have been a source of enlightenment. I plead with you, it's a very embarrassing moment for me. As governor also for 3 years, I never came out with any document for 6 months or 1 year or 2 years. I don't comment whether it is advisable or not. I feel humbled and embarrassed, but please listen to the leader of the opposition with full attention. Let us set a good example. Please, no Harinathji, no Harinathji, anyone out of track may be named by me. I may have to name. Leader of the House, I may have to name your member. I may have to name his member. No. I may. Please. We will hear leader of the opposition irrespective of the situation that what he says may not be generally palatable to all. Please, sir. And I'm sure, sir, you will bear this in mind. It's the last day. Help me that we all part way with a good resolution. नहीं, हम तो आपकी बात, हम तो इसमें विश्वास रखते हैं, कल करने का आज करो, आज करने का अभी करो, पल में प्रलय होगा फिर करोगे कब। तो हमारी नीति तो यह है सभी जल्दी होना और टाइम पे होना। लेकिन सर ये
लोकतंत्र में एक ऐसी बात होती है और डिबेट में छोटे मोटे विषय आते हैं और एक दूसरे के विषय में कुछ कहते हैं, तो अगर वो बहुत अनपार्लियामेंट्री है, किसी को दुखी करता है बहुत, तो उस वक्त आप कह सकते हैं ये अनपार्लियामेंट्री है, ये ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ जो हमारे आदिर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिप्सी ग्राउंड, उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी, नीरव मीन्स शांत, साइलेंट, अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। It happened there, sir. It happened in the other house. अरे अदर हाउस सर, I am pleading with you, Vice President of India and Chairman of this House, because you have to protect the democracy. I will react, sir. I will react. You have to. Thank you. ऐसा नहीं होता सस्पेंड करना, Thank you, क्योंकि उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में है, कैसा अटेंड करना, और वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आते हैं, कैसा करना। Thank you, sir. Thank you. CBI, CBC सिलेक्शन में वो रहते हैं, वो कैसे, यानी टू deprive from all these institutions. If Papers to be laid on the you table. suspend him, it is not good. It is not good. Sir, this house unanimously. Send a message. Shri Muralidhar, V. Muralidharan. Sir, can I have 1 minute before the paper leak? Sir, नहीं सर, ये जरूरी है। I have called papers to be laid on the No, table. that's correct, sir. I agree with You have to that. delete, you have to explain. Sir, the convention of this house. I will look into Please it. examine the record and delete this. 1 second. The convention of this house I is that will- the I will conduct look of the into other it. house is not at all discussed in this house. Look here. So the Please, comments Muralidharan made by the leader of the opposition Please. has to be examined and expunged. Okay. And it should be censored. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Prahlad Singh Patel ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1A in today's revised list of business. Shri Ashwini Kumar Chaube. मैं आपकी अनुमति से आज संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 1 ख पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। श्री कृष्णपाल। आदरणीय सभापति महोदय, आपके अनुमति से मैं आज की पुनस्कृत कार्यसूची में क्रम संख्या 1 ग पर अपने नाम के सम्मुख सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करते हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री नित्यानंद राय। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 1F पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। कुमारी शोभा कारंद लाजे। Respected Chairman, sir, I lay the papers shown at serial number G of the revised list of business in the Rajya Sabha for today on the table of the House. श्री सोम प्रकाश। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 1H in the revised list of business for today. Thank you, sir. श्री कैलाश चौधरी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 1I पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री कौशल किशोर। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1I पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ।
श्री BL वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 के टॉप पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। श्री देवू सिंह जयसिंह भाई चौहान। Honorable Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 1L of today's revised list of witnesses. श्री V Muralidharan। Respected Chairman Sir, with your permission, on behalf of my colleague Dr. Bharti Praveen Pawarji, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 1M in today's revised list of business. Dr. Mudpura Mahendra Bhai। Chairman Sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Statement by Minister correcting answer to question, Shri Narendra Singh Tomar। माननीय सभापति महोदय, मैं आज के लिए संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 के समक्ष दर्शाया गया वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। Chairman Sir, with your kind permission, I lay on the table of the House the statement regarding status of implementation of the observations contained in the 171st report of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Commerce on issues affecting the Indian tea industry, especially in Darjeeling region, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. Farewell address to retiring members. Honorable members, as you may be aware, one second. After the farewell address, please. Very emotional one. Everyone wants to. One. Okay, Mr. One second, please. Sir, I give floor to Shri Tiruchi Shiva. Sir, thank you, sir. Sir, just what is the issue, sir? Very 3 bullet points, sir. I've got nothing much to elaborate. Sir, on a point of order raised by the leader of opposition in March, you gave a ruling in April, last sessions, that anything can be discussed and any person can be discussed on the floor of the House. I am fully alive to it. So, sir, when Honorable Muralidharan said about LOP's observation about Adhir Ranjan Chaudhary, as per your ruling, sir, he is allowed. I will give my ruling. Number 2, sir. Okay. Number 2, sir. One second. You have raised a point of order. I will give my ruling. Thank you. Number 2, sir. Thank you. Sir. Number 2. No. Sir, number 2, sir. Number 2, sir. Yesterday. Sir. Very important. Please. Farewell being to the last members. day, sir. Yeah, we are. I have reserved my ruling. Sir, I know the importance of this. I have reserved my ruling on a point of order with the Honorable LOP. Which you have reiterated. Sir, pertaining to what has to be transferred, sir. We shall take it, sir, with emotion, sir. What is the next? We'll join with them. Number 2, sir. Yesterday, my notice on 167, sir. And I'll come to that later. Listen, one moment, sir. In the next one. One moment, sir. You can read with 168. I gave it in writing because you may find fault with it. Yes. And now, sir, yesterday you acceded to it. But till morning, sir, we waited all day yesterday. Thank you. We didn't receive any communication from the government side. So we are prepared for a discussion and they are not. Okay. Number 3, sir. Sir, in my experience, 4 terms here, sir. Please. Privilege I understood. Sir, not members have been referred to privilege committee for minor things, sir, like Derek and Jairam Ramesh. No, nothing will go on record. Please, nothing will go on record. Honorable members, no decline. Honorable members, as you may be aware, 9 of our colleagues, please, 9 of our colleagues, they have been our part. Jairam, 9 of our colleagues from states of Gujarat and West Bengal, namely Shri Dinesh Chandra Jamal Bhai Anwadia, Shri Jugal Singh Lokhandwala, Shri S. Jaishankar, Shri Derek O'Brien, Susri Dola Sen, Shri P. Bhattacharya, Srimati Shanta Chetri, Shri Sukhendra Shekhar Rai, and Susri Susmita Dev. They will be retiring
on 18th August 2023 on completion of their term of office. 4 of the retiring members, Shri S. Jaishankar, Shri Derek O'Brien, Susri Dola Sen, Shri Sukhendu Shekhar Rai, have been re-elected. Our congratulations them for being re-elected. With their experience, they will bring on the table a greater commitment and direction. We will have their continued contribution of their experience, talent and intellect, and sagacity in the House. The House will be missing other 5 retiring members who have made rich and significant contributions to the proceedings of the House during the course of their tenure. I am sure they would cherish the unique honor of their association with this House and will continue with their contribution to the nation at large. I will personally urge the retiring members to maintain live contact with members with whom they have spent major part in the House. Srimati Shanta Chetri became a member of Rajya Sabha in 2017 by getting elected unopposed from the state of West Bengal. She also served as a member of West Bengal Legislative Assembly for 3 terms. A postgraduate in commerce from North Bengal University, she is an ardent advocate of women empowerment both inside and outside the House. She has raised the issues affecting the gender divide and development of northeastern region on numerous occasions in the House. Her absence would be felt by us all. Shri Pradeep Bhattacharya, a distinguished personality in Indian politics, became a member of Rajya Sabha in 2011. An educationist by passion and profession, he brought with him vast legislative experience into the House. He has served as a member of Legislative Assembly of West Bengal from 1972 to 77 and that of 11th Lok Sabha from 1996 to 97. The present term is his 2nd term in the Rajya Sabha. He has also served as the chairman of the Committee on Home Affairs. He is actively engaged in various intellectual pursuits outside the House and also inside, including being part of Asiatic Society. Asiatic Society, honorable members, is a mother institution. There is no institution in the country older than that. His wise counsel would surely be missed by all of us, but we are confident he will continue to impart it through the honorable members. Shri Dinesh Chandra Jamal Bhai Anawadia has been a member of this August House since February 2021. He has made significant contributions to the deliberations of the House by raising issues of regional and national importance from time to time. He also takes keen interest in Kabaddi, and surely we should keep Kabaddi out of the House. Gardening and Navratri celebrations. He was also the director, Gujarat State Road Transport Corporation. He is a committed and public-spirited citizen. Shri Jugal Singh Lokhandwala was elected to this August House in July 2019. During his tenure, he brought attention on various crucial issues concerning cultural heritage, digitization of manuscripts, a very important aspect, health awareness and promotion of sports in the country. An avid social worker himself, he carried forward the commendable initiatives initiated by his late father, Shri Mathurji Lokhandwala. He was also the director of Gujarat State Civil Supplies Corporation Limited. He takes keen interest in tennis, badminton, and singing. Susri Susmita Dev, barrister by profession, an alumna of Delhi University, Thames Valley University, London, and King's College,
one of the most reputed institutions in the world. Susri Susmita was elected unopposed to the upper house in September 2021. Prior to this, she was a member of the 16th Lok Sabha, 2014 to 19, from Silchar, Assam. She has also been a former member in the Assam Legislative Assembly. Coming from a political background, her father, late Sri Santosh Mohan Dev, had served the country as cabinet minister and Lok Sabha member for 7 terms, including in the 9th Lok Sabha. I make particular reference to 9th Lok Sabha because during which I had the occasion as a member of the 9th Lok Sabha of sharing the floor with him, getting his guidance, and he was a strict disciplinarian. He would always walk up to me and tell me scrupulous adherence to conduct in the House is non-compromising, and as a junior minister, you have to be in obedience of one and all. I was Parliamentary Affairs Junior Minister. Her grandfather, Sri Satyendra Mohan Dev, was a renowned freedom fighter. Honorable members, retirement from Rajyasabha is just a transitory phase, and I can tell you so. I came to this house about 30 years ago as a minister. I am back. So it is transitory. While it is painful to say goodbye, we must also celebrate the impact these members have had through their effective participation in debates and discussions on the floor of the House. May their journey ahead be as fulfilling and impressive as their time in Parliament. To our retiring members, I thank you for being an integral part of the journey of Bharat's democracy. Your presence will surely be missed, but your impact will forever be felt. I wish you good health, happiness, and fruitful years of service to the nation. Honorable members, in nation building, former members of Parliament indeed have a significant role to play. They constitute experienced think tank, and I'm sure they will continue to be so engaged to serve the nation in that capacity as well. Leader of the opposition. On this point, sir. On retiring members, leader of the opposition. सर, आज जो मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं तो हमसे तो वो दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा होता है थोड़े दिन के लिए वो हमसे अलग भी रहे तो फिर दूसरे दफ़ा फिर मिलने का चांस रहता है, लेकिन आपको और मेरे को उनसे मिलने का चांस आएगा या नहीं, ये नहीं पता, क्योंकि उम्र के लिहाज से हमको सोचना चाहिए। तो ये जो मेंबर्स जो यहाँ आते हैं वो अपने विचार, अपना एक विचारधारा को लेके इस सदन में आते हैं, लेकिन उनको अगर जो भी समय नहीं मिल सकता अपनी बात रखने के लिए या अपने दिल की बात या उनके एरिया की बात या जिस स्टेट से वो आते दिल हैं, की बात हो चाहे मन की बात हो, दोनों कहने का अवसर मिलना चाहिए। तो मन की बात तो मोदी साहब करते हैं। नहीं सर, मन की बात दिल की बात करता हूँ, मैं दिल की बात करता हूँ। तो चलो मन की बात दिल से, हाँ, ये मीटिंग ग्राउंड है। नहीं, दिल अलग है, मन अलग है। तो सर कभी तो आप मुझे पॉइंट स्कोर करने का मौका दें। हाँ, कभी तो आप मुझे पॉइंट स्कोर करने का मौका दें। नहीं, आप हमेशा स्कोर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये मणिपुर के जैसे इशू आते हैं ना, वो जरा हमको आपको जरा अलग कर देता है। आप उधर ज़्यादा देखते, इधर नहीं देखते, वही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मेंबर्स रिटायर होते हैं ये
थोड़े समय के लिए, लेकिन अब जाकर फिर सामाजिक कार्य करते हैं और बहुत से पढ़े लिखे हैं, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कोई बैरिस्टर है, कोई अपने स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे सभी लोग यहाँ पर आए हैं और वो उनका बहुत से इसमें यंग लोग भी हैं। तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि वो समाज की सेवा करें और जिन विचारधारा पे वो विश्वास रखते हैं उस विचारधारा पे चलने की पूरी कोशिश करें, तभी कुछ लाभ देश को भी होता है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सामाजिक कार्य में जो जुटे हुए हैं वो हमेशा उस मार्ग पे चलते रहेंगे और फिर इस सदन में आके अपना ये सदन हो या वो सदन हो, कहीं तो फिर अगर आ गए तो निश्चित रूप से समाज को भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है और उनके वजह से समाज में एक अच्छा वातावरण भी पैदा होता है। इसीलिए मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से, अपने नेताओं के तरफ से यही कहूँगा कि ये जो लोग रिटायर हो रहे हैं ये परमानेंटली रिटायर नहीं हो रहे या ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। मुझे कभी कभी अजब लगता है, कोई लोग कहते हैं कि भाई हम रिटायर हो गए पॉलिटिक्स। अरे रिटायर होने के लिए आए पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में तो आप इसलिए आते हैं कि अपने उसूलों को, अपने आइडियोलॉजी को सतत उसको जीवित रखने के लिए आते हैं। लेकिन मैं सुनता हूँ बहुत से नेता लोग, नहीं भाई हम अब रिटायर हो गए। फिर क्या सर्विस करने आए थे? क्या गवर्नमेंट सर्विस थी? ये तो लाइफ लॉन्ग सर्विस है आपकी। तो इसीलिए मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि वो अच्छे लोग हैं, आगे अपना काम करके और भी दिखाएंगे और देश को मार्गदर्शन करते रहेंगे, ये मेरी विनती है। लीडर ऑफ द हाउस। माननीय अध्यक्ष महोदय, जुदाई हो विदाई हो उसमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन साथ ही साथ एक सेलिब्रेशन का भी मौका है। हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कार्यकाल का। अलग अलग मान्य सदस्यों ने, सांसदों ने बहुत सारा योगदान दिया है, कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, कई भाषण दिए, कई प्रश्न ज्वलंत विषय उठाए, अलग अलग रिफ्लेक्शंस देके सदस्य यहाँ से निवृत्त होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं और सबको अलग अलग जिम्मेदारियां उनकी पार्टी देती है। हमारे यहाँ पे भी लगातार ये एक चर्निंग प्रोसेस रहता है कि व्यक्ति कभी सरकार में आता है, कभी सदन में आता है, कभी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इस प्रकार से व्यक्ति का भी निर्माण होता है और साथ ही साथ देश की सेवा के अन्य अन्य तरीकों से मौका राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलता है। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी मान्य सांसदों को जिन्होंने इतने वर्ष देश की सेवा में सदन में भी योगदान दिया। डॉक्टर जयशंकर का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वैसे तो खुद वापस चुन के आ भी गए हैं, लेकिन इतने छोटे कार्यकाल में जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, 4 साल का, उस 4 साल में माननीय जयशंकर जी ने सिर्फ सदन की गरिमा नहीं बढ़ाई, लेकिन आज पूरे विश्व में भारत का जिस प्रकार से नाम और सम्मान बना है, जिस प्रकार से भारत की बात वो तीव्रता से रखते हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व में आज भारत के विदेश मंत्री की पहचान एक अलग ही प्रकार की बनी है। मैं समझता हूं कि एक संसद में नया व्यक्ति, आई एम कमिंग टू अदर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, सर अगर और भी लोगों पर चर्चा करने ऑनरेबल मेंबर्स, बहुत दुर्भाग्य है कि एक सेलिब्रेशन, ऑनरेबल मेंबर्स, एक सेलिब्रेटिंग somebody's contribution to the country पे इनको दुख हो रहा है। One second. Honorable members, while the leader of the house has reflected on a particular member, I share your sentiments
every member in this house who is retiring and who could have retired but is continuing because of re-election, they made significant contributions. And those who get the opportunity of being a minister have a different kind of performance. We are proud, but we are equally proud of the members who did not have the occasion because their party is not in power. So the implication of leader of the house is not a reflection on other members. For example, there are many heated moments. There are many moments where from the chair I reflect differently. But I know the people before me are very, very talented. Take the case of Sushmita Dev. I have highest respect for her. So I wouldn't look at a particular moment. I would see her credentials in King's College, the kind of contribution she has made, the kind of lineage she has for 3 generations. If I look at to Mr. Andy Gupta, 1 second, he has been president of Chartered Accountants Association. His son has been president. If I look at Mr. Pathak, Jairam Ramesh, everyone. So, assuming that I was not going to mention so what I mean to say, of other members. It's so sad. One second. It's so sad that they are assuming I will not mention the other members. So all I can say is the leader of the house, and over a period of 1 year, I have interacted with him. As a matter of fact, the leader of the house can suffer an allegation that he is more in connect with the members of parliament this side. Yes. So please go ahead. Conclude. Please conclude. So Dr. Jaishankar has truly made the country proud across the world, particularly in very trying circumstances during the Ukraine crisis, the way he brought back our students, which all of us as members have witnessed. Derek has been an old friend. We came into parliament around the same time, if I remember correctly, or a year or 2 apart. And over the years, we worked together, both in opposition, we worked in different parties, but with a lot of floor coordination as opposition members. And despite some of his very different views, I think the national spirit that all the retiring members have reflected on different points of time, the nation first philosophy, which I think all the members of this house will agree with me is important, has been the overarching framework in which members of parliament have worked. सुष्मिता बहन ने लोकसभा में भी काम किया, यहाँ भी काम किया. डॉक्टर रॉय आपके आसन पे भी जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया पूरे सेशन की प्रोसीडिंग्स को, हमारे गुजरात के 2 एमपीज, हमारे पश्चिम बंगाल के बाकी माननीय सदस्य, हर एक ने राजनीतिक जीवन में भी अपना प्रभाव रखा है, सामाजिक जीवन में भी बड़ा योगदान रहा है. बहन डोला सेन और मेरा व्यक्तिगत संबंध इसलिए भी है कि वो टेक्सटाइल्स कमेटी में भी मुझे बहुत अच्छे सुझाव देती है और चेंबर में अंदर आने से भी रोकती है. तो हर प्रकार के अनुभव, हर प्रकार के विषय हाउस में होते हैं, लेकिन मित्रता कभी खराब नहीं होनी चाहिए, संबंध कभी बिगड़ने चाहिए. मतभेद हो सकता है, पर मैं समझता हूँ किसी के भी साथ इस सदन में किसी का भी मनभेद नहीं हुआ है, और यही इस सदन की और पार्लियामेंट की गरिमा का सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे बड़ी उपलब्धि है. सभी को मेरी शुभकामनाएं जो भी रिटायर हो. ऑनरेबल मेंबर्स, I'll 1 second. 1 second. 1 second. Please take your seat. I have taken note of it. I'll indicate who has to speak. 1 second. No, I'll miss a point. Let me. Honorable members, I recollect one particular instance. Ms. Dola Sen, I recollect a particular moment. As Governor West Bengal, I got a request that a delegation of members of parliament, including Ms. Dola Sen, want audience with me. I immediately granted audience. Now we had very frank discussion. And when things get very frank, the vocal cords get more active. So my security outside was equally worried what is happening inside.
and my ADC came to the room. Sir, is everything all right? But that scene in the Raj Bhavan is a minor incident. This one I have seen. But contributions have been immense intellectually. Point of order. पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। सर आपने मेरा परमिट किया था। नीरज जी, I saw Pramod Tiwari before. He caught the eyes of the chairman before anyone else could. सर मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि सदन परंपराओं से चलता है। नियमावली में जो हम कार्रवाई करते हैं सर, ये परंपरा रही है पुरानी, कई बार परंपरा रही कई पुरानी कि जब कभी सम्मानित सदस्यों की विदाई होती है, तो आपने बड़े अच्छे शब्द बोले, बड़ा चुन चुन के बोले सर, परंतु ये परंपरा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विदाई के समय सदस्यों के मौजूद रहते हैं। ये कई बार की परंपरा है पुराने सभी सदस्यों। तो आज तो उनको बुला लीजिए, आज तो बुला लीजिए, इस तरह राज्यसभा का अपमान न करें। So, honorable members, I get the. Oh, okay. Oh, okay. सभापति महोदय, श्री किरोड़ी लाल मीना। सभापति महोदय, What is your point of order, sir? पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से डिसऑर्डर हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज डिक्लाइन। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। नो नो नो, डायरेक्ट डोंट डू इट। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। I will allow leaders of other parties to say on retiring members. Shri Tiruchi Shiva, please take your seat. No, nothing will go on record. Nothing will go on record. Take Mr. Piyush Goyal. Mr. Goyal, see there. Mr. Tiruchi Shiva. Only Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. On retiring Mr. Tiruchi Shiva. Only on retiring members. Only on retiring members. Our sentiments we are required to express, and trust me, honorable members, when you express sentiments for members who are retiring, you are addressing a very large segment of retired members. Tiruchi Shiva, please. Tiruchi, I'll come to you. Tiruchi Shiva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Please listen to Tiruchi Shiva. Sir. बोलिए तिरुचि go ahead. For retiring members, farewell to retiring members. I'll go to it. But Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. बोलिए. Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. Farewell to retiring members. Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. Not any other Mr. Tiruchi Shiva, please address the chair. If you want to address, I call the next speaker. Sir, now I address the chair. Mr. Tiruchi Shiva. One second. The House is adjourned to meet at 12 noon today.
I lay a copy of the said बैठिए यस प्लीज बोलिए। मुझे समझ में नहीं आता आपका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है लीडर ऑफ द हाउस से कि आपने बात की और वो आगे। अब आप हमारे माध्यम से क्यों करते हो? सीधी कर लिया करो। क्योंकि इन्हीं के मित्र पक्ष के सीनियर लीडर ने मेरे को बाहर पकड़ लिया ये समझाने के लिए। नहीं पकड़ लिया, नहीं क्लैरिफाई कीजिए। पकड़ लिया मतलब मुझे कहा कि भाई हम भी आपके फिजिकली तो नहीं पकड़ाने, फिजिकली तो नहीं पकड़ाने। ऑनरेबल मेंबर्स नाउ यस मिस्टर अनावाडिया। धन्यवाद सभापति महोदय जी। आज हमारा लास्ट डे है पार्लियामेंट में। मुझे यहाँ पार्लियामेंट में भेजने के लिए हमारी पार्टी के और इस देश के समग्र विश्व के नेता और हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहब का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को एक बड़े सदन में लाने का मौका दिया है। मैं गुजरात से आता हूँ, मैं कुम्हार प्रजापति समाज से आता हूँ। गुजरात कुम्हार प्रजापति समाज से 75 साल में पहली बार प्रजापति समाज कुम्हार समाज को राज्यसभा में लाने का मौका सम्माननीय मोदी साहब ने दिया है। मैं उनका दोबारा बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मेरा समाज मिट्टी से जुड़ा हुआ समाज है और मैं किसान पुत्र हूं और ऐसे कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता था। भारतीय जनता पार्टी का 1981 से कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते संगठन में ही काम करता था और सीधा मुझे इतने बड़े सदन में बिठाने का मौका उन्होंने दिया है। तो मैं मेरी ओर से, मेरी परिवार की ओर से और पूरे गुजरात और पूरे हिंदुस्तान के मेरे प्रजापति कुम्हार समाज की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और आदरणीय अमित भाई शाह साहब और आदरणीय नड्डा साहब का और हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। मैं सर एक मिनट मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे सदन के माननीय सभापति जी आदरणीय धनखड़ साहब का कि उनका भी मार्गदर्शन हमको मिला है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय हमारे लीडर ऑफ हाउस का आदरणीय श्री पीयूष जी गोयल सर का और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे सभी माननीय सदस्यगण, सभी पार्टियों के लीडर्स, सबके पास से मुझे बहुत सारा सीखने को मिला है। ये सदन में आप सबका मार्गदर्शन मुझे मिला है और जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो मेरे व्यवहार से, वाणी से, वर्तन से, तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूँ और मैं हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन LOP सर का भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने भी, उनके पास से भी हम बहुत कुछ सीखे हैं। ऐसे इस सदन के सभी पार्टियों के सभी सदस्यों को मैं आभार मानता हूँ कि आप सबके पास से मुझे बहुत सीखने को मिला है। आभार अस्तु। भारत माता की जय। वंदे मातरम। थैंक यू। श्री प्रदीप भट्टाचार्य। Thank you, sir. Sir, I am very happy that you have given me the opportunity to spell out. To retire? I have not given the opportunity to retire. No, you have not given me the chance. You have given me the chance to say a few words. But as you recall, when I met you at your chamber, I told you very frankly, sir, I don't believe this type of drama. So kindly don't allow me to say. But in spite of that, you are so kind enough, you have again tell me to speak something. So I would like to say, first of all, my good wishes to all my colleagues, those who are in this side and that side, and I am sure of it,
they will be able to run this house properly and smoothly, so that the people of the country will understand Rajya Sabha is alive and they are doing something good. Sir, with my long experience in politics, at least for 50 years, I had the opportunity to work with Indira Gandhi, Atal Bihari Vajpayee ji, Narasimha Rao ji. Now I am functioning with our leader of the opposition, Kharge ji, and so many colleagues from this side and that side. Whenever I met some of our honorable ministers, they have listened to me and they have tried their level best to help me so that I can serve to the people of the country. Then lastly, I feel I had the impression that at least this August House will come out with a resolution in regard to the Manipur issue. But unfortunately, it did not happen. But just for a moment, I said I was a teacher of a college for last 29-30 years. So my two students are working at Manipur. They are the Government of India service. Sir, just a minute. They rang me a few days back and told me why Rajya Sabha is not coming out of saying something about the Manipur. Point noted, sir. It is noted. their feeling, heart feeling. So I would like to impress this House. This is the position. Lastly, again, if I do something wrong, kindly excuse me. And I wish everybody should be good health and good life. लोखंडवाला. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में माननीय अमित शाह जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय जेपी नड्डा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट कमेटी, हमारे सदन के नेता एवं गुजरात के हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे संगठन के CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष श्री, इन सब का आभार व्यक्त के साथ बहुत हमारे यहाँ के नेता माननीय पीयूष गोयल जी और सभी सदन के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे सामने मैं बात करता हूँ सर, मैं करता हूँ सर, मैं सामने बैठे हमारे ऑपोजिशन लीडर माननीय खड़गे जी और माननीय उप सभापति हरिवंश राय जी और ब्यूरोक्रेट्स और मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता और मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने आशीर्वाद दिया है, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुन्ना भाई, आज ये 4 साल और 1 महीना मेरे कार्यकाल का हुआ, उसके अंदर 2 से 1.5 साल कोविड की महामारी के अंदर हम सब लोगों ने वो फेस किया। उसके अंदर जब पहले 2-3 चीज के अंदर उसके अंदर मेरी साइन रही 370 और 35A की, जो राष्ट्र को जोड़ने की, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग था, उसको जोड़ने के अंदर मेरी साइन रही। 3 तलाक, CAA और ऐसे कई कानून बनाने के अंदर मेरा सहयोग रहा। मैं मानता हूं कि शायद ही मैं ऐसा खुशनसीब हूं कि ये संकल्प जो था हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उन्होंने जो लिया था, वो संकल्प के अंदर हमारा साइन था। मैं 2-3 बात कह के मेरी बात खत्म करूंगा सर। इसके साथ यहाँ बैठे काफी सारे मित्र भी हमें बहुत अच्छी सेंट्रल हॉल की कमी रहेगी। जब मैं गुजरात रहूंगा तब सब लोगों को मिस करूंगा। सबको, सामने वाले सदन से भी मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे और पर सब लोगों को कहीं ना कहीं कोई बात रहती थी तो सेंट्रल हॉल के अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते थे और वो वार्तालाप मुझे आने वाले वक्त में काम आने वाला है, ऐसा
मनोज जी कह रहे थे। और इसके साथ जॉन जी, हम लोग कमेटी के मेंबर, डॉक्टर जॉन, बहुत सारे कमेटी के मेंबर, जॉन जी आपका सहयोग चाहिए मुझे इस, आई क्वेश्चन यू, डोंट डू इट। और देयर इज अ प्रोसीजर टू फॉलो। जिस तरह हर एक बात में हमारा, मैं तो चाहूंगा कि हम हर एक बात में पॉलिटिकली ना निकाले, क्योंकि आने वाले सदन के अंदर शायद आप हमारे पास रहने वाले हैं, ये ऐसा मुझे 100% विश्वास है। थैंक यू। और सर एक ही बात, आज विश्व जानता है कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको 1.5 घंटे तक यहाँ वो स्पीच दे रहे थे, तो सामने भी वो बोलने नहीं देते थे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूं हर एक का विचार होना चाहिए और कहना चाहिए, जिसको जो चाहे जो कह सकता है। आप लोगों से श्रीमती शांता छेत्री सर, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, वेंकैया नायडू जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमें यहाँ आए तब बोलने का मौका दिया था। यहाँ के जो जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमसे हंस मिल के, यहाँ पे जितने भी मार्शल है वो हंस के हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो ये शायद ही हमें, मैं गुजरात रहूंगा तब मिस करूंगा और आपको भी मिस करूंगा सर, जब भी आप मिलते हैं, हंस के मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्रीमती शांता छेत्री, थैंक यू सर, we'll miss you. सर Your presence has been impactful. Okay sir. Your absence will be felt. Yes sir, thank you. Go ahead. Thank you sir. सर आज 11 अगस्त स्वतंत्रता संग्रामी खुदीराम बसु का डेथ एनिवर्सरी, आज का दिन बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उनके प्रति मेरा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपना फेयरवेल भाषण देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। Sir, on 18th of August, my term as Rajya Sabha MP will come to an end. I am eternally thankful to our Supreme Leader, Honorable Mamata Banerjee, for giving me this opportunity. It is due to her trust in me today. I can proudly say that my body of work is in Parliament records for eternity. This opportunity has fulfilled my greatest dreams. I am a contented person, now happy with a life spent well. What more can one ask for than contentment and joy, which my heart is filled with? Thank you, Mamata Didi. Sir, I take this opportunity to thank our Honorable Chairman and member of the House for all the support and exchange of knowledge. In these 6 years, I have worked tirelessly to represent the Gorkha people of Darjeeling Hills and as well as the state of West Bengal. I did not waste a single opportunity to take up matters concerning our Darjeeling Hills as well as my state, West Bengal. I have spoken for the 11 communities' tribal status, inclusion of Lepcha language in the 8th schedule, spoke about tea workers, roads, national highways, problems during monsoon, the Karshang TV tower, not to relocate army hospital matters, concerning Himalayan railways, etc., etc. The list goes. More than 400 questions have been admitted in the parliament. Sir, I introduced all the 11 private member bills related to my state of West Bengal as well as Darjeeling Hills. I have spoken on the third gender bill and presented my valued opinion and suggestion, which was satisfying as this gender deserves a lot more. Sir, I have spoken innumerable special mentions and 0 hours, attended regularly all the committee meetings and tours. My 6 years was spent complete hard work and learning. Sir, as I move on from this role, I am grateful for trust you have placed in me and for the invaluable lessons I have learned from my fellow parliamentarians. I would also like to thank my TMC members
who have been my strength and support all along this fantastic journey. As I bid farewell to the Rajya Sabha, I carry with me a sense of accomplishment, a deep appreciation for the democratic process, and a commitment to the continue contributing to the betterment of society. I will cherish the memories made here and the lessons learned, and I will forever hold in my heart the privilege of having served alongside some of the brightest minds and most dedicated individuals in our nation. Thank you, honorable members and all the employees of the Rajya Sabha for this incredible journey and for the opportunities and for the unwavering support. May this house continue to be a beacon of democracy and a forum where the collective wisdom of diverse voices shapes the destiny of India. Finally, I wish that as the sun rises over the majestic Tiger Hills and turns it into gold, I pray that our India Party rise with the same glow on May 2024 to bring forth a beginning of a golden era for India. Jai Hind, Jai Bangla, Jai Gorkha. Thank you, sir. Sushri Sushmita Dev. Thank you, sir, for the opportunity. Today is Martyrs' Day, so I would like to start by paying my deep tribute to Khudiram Boshu. Sir, incidentally, on a lighter note, my division number is 144, which is a partial curfew, as you know. So I have waited for my opportunity for very long to speak. And you took it so literally. You know, 144 is my division number, 144 hai. Kya kare, sir? Anyway, I am extremely grateful, sir, for your kind words. And every leader of the floor from various parties who have spoken. I come from Northeast, sir, from the state of Assam. And I think कुछ ऐसे बहुत कम उदाहरण है कि Northeast के किसी प्रदेश से किसी हाउस में कोई आए किसी बाहर के प्रदेश से. As you know, my late father won 2 elections from Tripura. And Kalita ji will be able to say that Professor B.B. Datta was once nominated. I think I am the 3rd such member who comes from a state in Northeast, but I am honored that my leader Mamata Banerjee gave me a seat in Rajya Sabha coming from Northeast from the state of Bengal. Sir, when I won in the 16th Lok Sabha, very often I used to come to these galleries in Rajya Sabha to watch what the upper house is saying. I used to watch very keenly what Mr. Jaitley is saying and how Mr. Chidambaram is debating on GST. I watched Derek O'Brien, Shukhendu Da, Professor Yadav, and I used to truly feel that what a privilege it is to be in this house. And contrary to popular belief, I never expected I'll come to the upper house. लोग कहते हैं कि इनको तो पता था ये राज्यसभा में आएंगे, मुझे पता नहीं. I was the first one to congratulate you. Right, sir. I was the governor then. As the governor of Bengal, you called me and congratulated me. हम एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, but I would also like to mention that an integral part of this house is not just the members, but it's the marshals, it's the staff who sits here, and however the Secretary General who guides us through many moments, I would like to thank them also. Sir, coming from Northeast, I'm not going to make a political speech at all, but I will say one thing. Keeping the states of Northeast stitched together is a Herculean task, sir. Is it not political? It's a Herculean task. Whenever someone says I am not going to make a political speech, means I will not criticize. Sure it will be 100% I will not political. criticize anybody today. I will not criticize anybody today, but I feel that the way the peace in Northeast has been stitched together, it's a very delicate process. It's a very delicate process because different aspirations, so I will not use the word conflict, today is not that day, but different aspirations of different ethnic groups, different linguistic groups. I myself
am a linguistic minority from Assam. It's a very fine balance. It's a very fine balance that we should all strive to maintain even in the future. That's all I ask. That's all I ask. और एक बात सर मैं कहना चाहती हूँ, 16th लोकसभा में एक और खासियत थी. After many decades, a government came to power with absolute majority. After many decades. And in that, I think, was a golden opportunity to do policy reforms and do many good things for the country. So, beyond that, whether that has been done or not done, I am no one to comment. But I hope that the effects of this majority will be judged by the people. So I hate goodbyes. I hate goodbyes. I'm very bad at saying goodbye. So I'll tell all my colleagues on my right and on my left that I'm sure that we will meet again, whether it's inside the house or outside the house. And I would like to thank my leader, Derek O'Brien, Shukhendu Da, even Khadge ji, LOP. He guided me in the 16th Lok Sabha. He's today here in the Rajya Sabha. I would like to thank Leader of the House, Piyush Goyal ji. And I will end my speech with one story. Sir, in Lok Sabha, once a very complicated and technical bill came. It was about payment gateways, on credit card, and Jaitley ji was the finance minister there. So, achanak Khadge ji ne bola, Sushmita, this is coming up, you have to speak on it, because the person who was supposed to speak on it is not here today. And I just could not decipher that bill. I was struggling with it. I remember going to Digvijay Singh ji and asking. I went to Arun Jaitley ji to say, sir, you're moving this bill, I'm not being able to follow. In the next 10 minutes, I have to speak. So he told me how to debate that bill against the government. So, sir, however we may fight, how much ever we may fight, I feel those backroom channels that अरे बोलने दीजिए ना, क्या बात है? इतना खुशी. No, I'm just saying. So that is the beauty of Parliament, of democracy, that I hope to see in the future in this house and the other house. Thank you very much, sir, and I hope to see you soon again. When the honourable member Sushmita was saying, people on my right and left, I was wondering, people who are on your right are on my left. So we'll have to reconcile. Honourable members, the sentiments expressed by the retiring members and by leaders of the various political parties indicate that our bond will continue to flourish. And everyone living this house will be an integral part of this house. I had indicated on an earlier occasion that as Chairman Rajya Sabha, we will look after whenever they visit Delhi to make arrangement for their stay. And we have devised a mechanism that honorable members in this house need not get in touch with the Secretariat. They need to get in touch with the Secretary to Rajya Sabha, a very senior official, so that the members have least inconvenience. As regards certain issues of retiring members, like pension issues, all are settled before their last day of retirement. And this enlightenment I got on a situation that on 8th August 2022, after my election had been declared, but I had not taken oath, a former member of Rajya Sabha thought it fit to write to me as Vice President. Venkaiah Naidu ji was Vice President then, and said his pension issues are pending with Rajya Sabha Secretariat on one ground. And that ground is that Rajya Sabha Secretariat was insisting for an affidavit that must be sanctified by a gazetted officer. After taking oath of office on 11th August, after 1 hour at Uprashtrapati Niwas, I came to Rajya Sabha. And I asked the Secretary General, why are we delaying it? The honorable member retired in April.
We know his bank account. We know his details. And I was surprised. Rajya Sabha Secretariat said there is an act. That act has been passed by Parliament. That act is in pursuance to the recommendation of a joint parliamentary committee. And that act makes a provision that such a form should be there. I said the honorable member has already indicated he will go to court of law. With your strength, I directed the Secretary General then and there that all these provisions are not mandatory, they are directive. And I ensured on the same day the proceedings at Rajya Sabha Secretariat on that count. But sometimes when we engage into legislation, we create a mechanism that puts the executing authorities into problem. And that indicates that everything which is passed by this House as a legislation must be fully scrutinized. We in this House, the Joint Parliamentary Committee, they sanctified that a retiring member will have to give an affidavit duly signed by a gazetted officer. Secretariat was bound by it. I have held it to be directive. But if we had been more alert at that point of time, cared for the dignity of a retiring member, perhaps that situation would not have arisen. I have made it a condition here that before the member retires, everything must be formalized. And whenever an ex-member comes to Delhi, he has any problem of accommodation. In Western Court, we will try to accommodate as much as possible. Honorable members, I now take the question hour. It was always as a special circumstance, question hour at Yes, Mr. Meena. राजस्थान की हालात बहुत बिगड़ी हुई है सभापति महोदय। Question number 241, Shri Harnath Singh Yadav. Shri Harnath Singh Yadav, question 241. प्रश्न संख्या 241। Honorable Minister. Question 242, Shri Vaiko. Not asked. Honorable Minister. Question number 243, Shri Harbhajan Singh. Honorable Minister. Question number 244, Shri Kapil Sibal. Honorable Minister. सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत है। Question number 245, Dr. Sasmit Pat. Question number 245, sir. Honorable Minister. Question 246, Shri Josh K. Mani. Of the House. Question 247, Shri Shanmugam. Honorable Minister. माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पर रख दिया गया। Number 248, Shrimati Dasna Singh. Honorable Minister. Honorable Minister. Take your seat. Table of the House. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। Question number 249, Shri Narayan Das Gupta. Honorable Minister. Table of the House, sir. Question number 250, Shri S. Selvaganapathy. Honorable Minister. माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Question number 251, Ms. Dola Sen. Honorable Minister. पर रख दिया गया।
Question number 252, Shri M. Mohammad Abdullah. Honorable Minister. Question number 253, Dr. Amar Patnaik. Honorable Minister. माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Question number 254, Shri Abir Ranjan Vishwas. Honorable Minister. माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया। Question 255, Shri Jawahar Sarkar. Shri Jawahar Sarkar, go to your seat and raise the question. Honorable Minister. The House. I'm on my chair. Please, take your Donation. Take your seat. Please, take your seat. Take your seat. Sushmita, take your seat. Please take your seat. Take your seat. Take your seat. Sushmita, take your seat. Honorable members, one second, listen to me and take your seats. I'm addressing the issue. Take your seat. माननीय सदस्यगण, आज अपने लिए बहुत सोचने और चिंतन का मौका है और मुझे आज प्रातः है अटल जी की एक कविता का ध्यान आया, क्या खोया क्या पाया। 20 तारीख को यदि अगर आप चेयर की बात मानते तो जो लोकसभा में हुआ है और लोकसभा में जो व्यापक स्तर के ऊपर मणिपुर पर चर्चा हुई है, गृह मंत्री ने चर्चा की है, प्रधानमंत्री ने की है, आप पर हम मौका चूक गए। The House is adjourned to meet at 2 p.m. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today.